Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. It is our part 5, and this is our last part of this chapter, chapter number 7, Control and Coordination. So, in previous video, we have learned about coordination in plants. We have seen the plant hormones, plant growth hormones, auxin, cytokinins, etc. So let us talk about that hormones, plant hormones specially. So two types of plant hormones, growth promoters and growth inhibitors. मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और जो ग्रोथ को रोकेंगे. So auxin, cytokinins and gibberellins are the growth promoters and ethylene and abscisic acid are the growth inhibitors. So हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में देखा था. Now hormones in animals. We have to see about animals, hormones specially. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? We will discuss this question. So how, what are the processes of hormonal or chemical changes in animals? कि अगर हमने पहले भी एनिमल्स के अंदर बात करी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस विल बी देयर, our spinal cord, our human brain, animal brain, etc. So this is about the electrical impulses and electrical means of the control and coordination. But hormones are the chemicals. हार्मोन जो कंट्रोल करेंगे एनिमल्स के अंदर वो एक केमिकली होगा. सो व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स, फॉर एग्जांपल हियर स्क्विरल्स. सो आपको मालूम ही है स्क्विरल्स जो होती है, सो एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन. मतलब जब वो डर जाती हैं, स्क्विरल्स डर जाती है, तब क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर, देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे. मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कोई भी सिचुएशन में, या तो उस सिचुएशन का सामना करो या फिर आप भाग जाओ वहाँ से. सो यहाँ पर स्क्विरल क्या करेगी, देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर फाइटिंग. या तो उसको फाइटिंग करना है स्क्विरल को, अगर कोई डरावनी चीज़ आ गई तो, या कोई एनिमल आ गया तो, या फिर उसको भाग जाना पड़ेगा, रनिंग अवे. सो बोथ आर द वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ डेट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज. सो गाइज हम बोलेंगे कि वो अगर डर कर भाग जाएगी तो चल जाएगा, मतलब उसको उसमें कुछ एनर्जी नहीं चाहिए. लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें, वो अगर लड़ेगी, सामना करेगी तो भी, और भाग जाएगी तो भी, उसको तो एनर्जी चाहिए. Squirrel will have to require energy, very complicated processes both. That's why they use the great deal of energy in controlled ways. कंट्रोलेशन में होनी चाहिए उसकी जो एनर्जी जो यूज़ हो रही है वो. Many different tissue types will be used and their activities integrated together in this action. So many muscles are involved in this. अगर उसको भाग जाना है तो अभी उसको मसल्स काम आएंगे, ठीक है, भागने के लिए, और उसको लड़ना है, सामना करना है तो अभी उसके मसल्स काम आएंगे. सो एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर, मीनिंग इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म टुगेदर इन दिस एक्शंस. सो हावेवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़, फाइटिंग और रनिंग, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. बोथ आर ऑपोजिट, फाइटिंग एंड रनिंग. सो हियर इज़ द सिचुएशन in which some common preparation can be usefully made in the body. What will be this preparation? This common preparation we will see. This preparation should ideally make it easier to do either activity in the near future also. मतलब फिर अगर फ्यूचर में भी कोई उसको ऐसी सिचुएशन आए तो उसको वो हेल्प करे, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए. दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर. मतलब नज़दीक में अगर कोई ऐसी घटना होती है फिर से, तो भी वो रेडी होनी चाहिए. सो हाउ वुड दिस बी अचीव्ड, हम ये अचीव कैसे करेंगे. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इट्स इन द स्क्विरल रिलाइड ऑन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वाया द नर्व सेल्स, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. So we have seen the disadvantages of this electrical impulses, कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती है उनका हमने एक डिसएडवांटेज भी देखा था. इसकी वजह से ही हम अभी हॉर्मोन्स देख रहे हैं. सो द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की.
On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the bodies. This is the advantage of chemical signals. Chemical signal meaning hormonal signal. Hormones यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हमको क्विक एक्शन लेना है उसके सामने. सो इट वुड रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हर एक बॉडी के सेल में नहीं पहुँचेगी. इट विल नॉट रीच ऑल द सेल्स, बट हियर chemical signal will reach all the cells and provide the wide ranging changes needed. Wide ranging meaning no limit here. Okay, range is larger range. This chemical signal is larger range. That's why the wide ranging changes are whenever needed. So this is done in many animals including human beings also. So using a hormone called as adrenaline that is secreted from the adrenal glands. So this is one example of hormone adrenaline and secreted by meaning वो कहाँ से रिलीज होता है, हमारी बॉडी से कहाँ पर बनता है. तो secreted from the adrenal glands. Look at the figure 7.7 to locate these glands. So we have here our 7.7 figure. Endocrine glands in humans, A is the male and B is the female. So here what is the difference between here male and female? So this only this gland, this endocrine system is here difference. In the male, testes will be there, and in the female here ovaries will be there. They secrete their reproductive systems. Reproductive structure will be changing in both the case. So male and female. All other are same, common between the male and female, but only this is the different testes and ovary. You have to remember. And another glands are the pineal gland in the brain, then pituitary gland, thyroid gland, hypothalamus in our brain system. We have another parathyroid gland, and here our thymus. We have pancreas, adrenal glands. Okay, this is about the humans. Now adrenaline is secreted directly into the blood and carried to the different parts of the body. So this is the transportation of the adrenaline to throughout the blood. वो blood में ही mix हो जाएगा और body के हर एक parts के पास पहुँचेगा. The target organs or space on the specific tissue on which it acts include the heart also. मतलब यहाँ पर जो target करेगा ये hormone किसके पास पहुँचेगा. So टारगेट ऑर्गन्स उसके जो भी होंगे जिसको उसको यूज़ करना है वो टारगेट ऑर्गन्स हो गए उसके. एंड स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स एंड इंक्लूडिंग द हार्ट. सो हार्ट ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस एड्रिनल सिक्रीशन. नाउ एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर. ओके, सो यहाँ पर ये एड्रेनालाइन सिक्रेट होगा तो क्या होगा, हार्ट विल बीट्स फास्टर, ज़्यादा धक धक करने लगेगा, रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. एज वी नो, हमने ऑलरेडी हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि कैसे ऑक्सीजन पहुंचाता है. सो हार्ट अगर फास्टर बीट करेगा तो सप्लाई ऑक्सीजन की होगी वो भी फास्ट होगी. सो मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन is reduced due to the contraction of muscle around the small arteries in these organs. So here what will happen, beside this the blood to the digestive system and the skin is reduced. यहाँ पर उसका ब्लड का जो पहुँचना होगा वो बहुत कम पहुँचेगा, reduce, because of this contraction of muscles around the small arteries in particular organs. So दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल. यहाँ पर क्या होगा, ब्लड यहाँ पर अगर कम हो गया है तो सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पर पहुँचेगा, आवर स्केलेटल मसल्स के पास. द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब मसल्स. सो डायफ्राग्राम कहाँ पर होता है, हमारे जो रिब्स होती है, रिब्स के नीचे, ओके, लंग्स के नीचे की साइड, एंड द रिब मसल्स ऑल्सो विल कॉन्ट्रैक्ट. डेट्स वाई द ब्रीथिंग रेट इज़ इंक्रीज. हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेंगे. ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विथ दिस सिचुएशन. सो दिस इज़ अबाउट द एवरी एनिमल, कि हर एक एनिमल में ये सिचुएशंस आती है. वेन एवर द डील इज वेन एवर द स्कैरी सिचुएशन, सच स्कैरी सिचुएशन इज देयर, सो आवर हार्ट बीट विल बी फास्टर, आवर ब्रीथिंग रेट विल बी इंक्रीज. So these are the things. Now such animal hormones are the part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination. So this is our second way.
what will be our first way is electrical impulses by the brain and by the nervous system. But here these hormones and this endocrine system is our second way of the control and coordination in our body. हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये दूसरा रास्ता है. Remember that plants have hormones that control the directional growth, meaning प्लांट्स के जो हमने ग्रोथ हार्मोन्स देखे थे वो प्लांट के अंदर ग्रोथ करने के लिए होते हैं. व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म्स. सो व्हाट अबाउट द एनिमल्स के एनिमल के हार्मोन कैसे होते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. दिस इज अबाउट एनिमल्स. सो हियर ग्रोथ हार्मोन आर नॉट more than in we can say with comparison to plants. The animals have no role in the growth hormones. We have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on the light or gravity. मतलब यहाँ पर साफ है कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो प्लांट की तरह नहीं होती है कि लाइट पे या ग्रेविटी पे डिपेंड हो. प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है, ज़्यादा लाइट मिली तो वहाँ पर ग्रो होगा, ग्रेविटी के हिसाब से उसकी ग्रो होगी, बट नॉट इन एनिमल्स. सो एनिमल आर द डिफरेंस. But if we think about it bit more, it will become evident that even in animal bodies also, growth happens in carefully controlled places. So this is about animals कि यहाँ पर growth कहाँ पर होगी, controlled places पर यहाँ पर growth होती है humans के अंदर. For example, we will see now plant will grow leaves in many places on the plant body. Here we can say plant. As we know, plants के जो leaves होते हैं वो कहीं पर भी वो plant के grow हो सकती है. प्लांट के किसी भी पार्ट के ऊपर द लीव्स विल बी ग्रो, बट नॉट इन एनिमल्स. बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस. हमारे चेहरे पर उंगलियां ग्रो नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज़ द कंट्रोल्ड ग्रोथ वी हैव. द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, मीनिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, फ्रॉम वी कैन से इन द वोब ऑल्सो द आवर ग्रोथ इज़ completely maintained, completely controlled growth is for the animals. Let us examine some example to understand how the hormones help in coordinated growth. So we will see the one example for these hormones. We have all the seen salt packet which say iodized salt or enriched with the iodine, meaning हमने सुना ही होगा कहीं ना कहीं पर कि आयोडीन वाला ही सॉल्ट लेना चाहिए, आयोडीन वाला सॉल्ट ही हमको खाना चाहिए. सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट. सो गाइज हियर वन एग्जांपल इज़ टाटा सॉल्ट. सो टाटा सॉल्ट के ऊपर अगर आप पैकेट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आयोडीन गारंटी. यहाँ पर लिखा है कि इसमें आयोडीन तो है ही, गारंटीड है. सो हम आयोडीन वाला सॉल्ट ही क्यों खाना पसंद करते हैं. वी हैव रीज़न. Iodine is necessary for the thyroid gland to make the thyroxine hormone. So we have seen the thyroid gland. हमने देखी thyroid gland कहाँ पर होती है, हमारी जो नेक का एरिया होता है वहाँ पर हमारी thyroid gland present होती है. So what will do this thyroid gland? The thyroid gland will make the thyroxine hormone. Hormone is thyroxine. Now thyroxine, what is the role of this thyroxine hormone? So thyroxine will regulate the carbohydrate, meaning sugar, glucose, fructose, etc. Then protein, fat meaning lipids, oily products. This all metabolism, meaning carbohydrate, protein and fat metabolism in the body is regulated by the thyroxine hormone so as to provide the best balance for the growth. हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं तो उनका एक मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म मीनिंग वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जैसी जिसकी ज़रूरत होती है वैसा हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल होता रहता है. सो दे विल प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ग्रोथ. हमारी जैसी ग्रोथ चाहिए वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट सब चेंजेस होते रहते हैं. सो आयोडीन इज़ द एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. सो इन लोगों को रेगुलेट कौन कर रहा है, थायरोक्सिन. और थायरोक्सिन का सिंथेसिस किसकी वजह से हो रहा है, आयोडीन की वजह से. डेट्स वाई हमें आयोडीन वाला ही नमक खाना चाहिए. इन केस आयोडीन इज़ डेफिशिएंट इन आवर डाइट, अगर आयोडीन नहीं होगा हमारे खाने के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट वी माइट सफ़र फ्रॉम अ गोइटर. गोइटर इज़ अ डिसीज गाइज. We can say one of the symptoms in this disease is the swollen neck. I will show you this picture. This is the swollen neck. This is the patient is suffering from the goiter disease. Goiter disease क्यों हो रहा है,
बिकॉज यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो रही है. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर थायराइड ग्लैंड इज एनलार्ज, डेट्स वाई द नेक इज स्वॉलन. यहाँ पर आप देख सकते हो नेक कैसे फूल गई है, बड़ी हो गई है, लार्ज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस थायराइड. बट ये हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की कमी की वजह से ये गोइटर डिसीज हो रहा है. दिस इज द सिम्टम कि यहाँ पर स्वॉलन नेक इज द सिम्टम. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क द रोल ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट ऑल्सो, द थायरोक्सिन, रोल ऑफ थायरोक्सिन. थायरोक्सिन कहाँ पर होता है? थायराइड ग्लैंड उसको सीक्रेट करती है. सो दिस इज अबाउट द थायरोक्सिन एंड थायराइड ग्लैंड. Now can you correlate this with the position of the thyroid gland in figure 7.7? So we have seen the figure 7.7, the position, the place of thyroid gland, and we can say here is the thyroid gland and this is goiter. In goiter this is the symptom कि यहाँ पर जो नेक होती है वो swollen होती है. So we can easily correlate this thing. Now sometime we come across people who are either very short or extremely tall. सो यहाँ पर वी कैन से मोटू पतलू, एक छोटा होता है वेरी शॉर्ट होता है एंड एक एक्सट्रीमली लार्ज होता है. हमने देखा है कि ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे देखने को मिलते हैं. सो वी कैन से द एग्जांपल ऑफ लंबूजी एंड ठिंगूजी. वेरी शॉर्ट मीनिंग ठिंगूजी एंड एक्सट्रीमली टॉल मीनिंग लंबूजी. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स? बट वाई दिस इज हैपनिंग short and extremely tall? Because the growth hormone is there. Growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary. As we know pituitary gland हमने ऑलरेडी फिगर में देख ली है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमको हाइट दे पाती है. वेरी शॉर्ट हाइट एंड एक्सट्रीमली टॉल हाइट जो होती है वो इसकी वजह से होती है कि जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. As its name indicates, the growth hormone regulates the growth and development of the body. So यहाँ पर growth hormone का काम क्या होगा? growth करेगा, development करेगा बॉडी की. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads the dwarfism. Meaning अगर चाइल्डहुड में हमारे पास अगर बचपन में ये हार्मोन कम है तो हम ड्वार्फ रह जाएंगे, मतलब हम शॉर्ट रह जाएंगे, ठिंगूजी रह जाएंगे. So you must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of the age. So this is the changes in the human body also and some other animals also. Changes will be there in particular age, meaning 10 to 12 years की अगर एज होती है ह्यूमंस के अंदर, so there will be a dramatic changes for hormones. Now these changes associated with the puberty are because of the secretion of testosterone in the males and estrogen in the females. So two hormones, keep in mind very important question कि यहाँ पर दो हार्मोन ऐसे होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर that will change after the 10 to 12 years of age. So in the males testosterone hormone is there and in the females estrogen hormone is there for the changes. Now these two hormones, particularly here testosterone and estrogen, are the we can say the part of our reproduction system. Human reproduction system का ये पार्ट है. जैसे एक we can say कि एक ह्यूमन होता है उसमें से दूसरा ह्यूमन कैसे बनता है, we can say this is the reproduction. So part of reproduction system. Now do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take the less sugar in their diet because they are suffering from the diabetes? So here one another example of the diabetes. So diabetes meaning कि शुगर का अमाउंट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है. सो डॉक्टर हमको क्या बोलता है कि भाई तू शुगर अभी कम लेना शुरू कर. सो डॉक्टर एडवाइस टू टेक द लेस शुगर इन द डाइट बिकॉज ऑफ दिस डायबिटीज़. नाउ एज अ ट्रीटमेंट हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? दे माइट बी टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन. आई हैव ऑल्सो गिवन यू एग्जाम्पल दिस इंसुलिन. इंसुलिन इज़ द हार्मोन. Insulin is a hormone for the regulating the sugar in our body. So this is a hormone which produced by the pancreas naturally. ये हम इंसुलिन के इंजेक्शन तो लेते हैं डायबिटीज़ होती है तब, बट हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? बिकॉज हमारा जो पेनक्रियाज है नेचुरली हमारे पेनक्रियाज में ये इंसुलिन बनता है. लेकिन डायबिटीज़ में क्या होगा, हमारा पेनक्रियाज या तो वर्क नहीं कर रहा होगा या तो स्लोली वर्क कर रहा होगा, तो हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं हमारी बॉडी को कि भाई शुगर कम कर दे, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है.
So this hormone which is produced by the pancreas and helps in the regulating ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड की जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन. सो अगर पेनक्रियाज, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका मतलब कि पेनक्रियाज वर्क नहीं कर रहा है. डेट्स वाई दे आर टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. नाउ इफ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन द प्रॉपर अमाउंट्स, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग द मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स. सो शुगर लेवल बढ़ जाएगा अगर ये सीक्रेट ही नहीं होगा तो डेट्स वाई द कॉजिंग द मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो, जो हमको नुकसान पहुंचाएंगी. इफ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन द प्रिसाइज क्वांटिटीज, वी नीड अ mechanism through which this is the done. So here regulation is necessary in everything. Here what is the regulation? So here hormones, रेगुलेशन इन हार्मोन सिक्रीशन. यहाँ पर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो कंप्लीट रेगुलेशन में ही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए. सो वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन. क्वांटिटीज़ विल बी मेंटेन क्वांटिटीज़ में होना चाहिए. द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर द रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. हियर फीडबैक मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी कैन से. यहाँ पर फीडबैक मिलेगी उसको कि भाई बस इंसुलिन ज़्यादा हो गया है, अभी इंसुलिन बंद कर दे. सो डेट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाय द प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. तो यहाँ पर देखो ये फीडबैक मैकेनिज्म कैसे मिली कि शुगर का लेवल जैसे ही ब्लड के अंदर बढ़ गया, राइज हुआ, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स. वो सेल्स, पेनक्रियाज के जो सेल्स होंगे उनको पता चल जाएगा भाई ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई है. सो विच रिस्पॉन्ड बाय द प्रोड्यूसिंग द मोर इंसुलिन. इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना वो लोग शुरू कर देंगे कि भाई जल्दी आ जा, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई है, इंसुलिन बढ़ा दे. तो क्या होगा, ब्लड का जो शुगर लेवल होगा वो कम हो जाएगा. एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस. अभी ब्लड का जो शुगर लेवल था बढ़ गया था, इंसुलिन वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन अभी ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो गया है. तो क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगा, इंसुलिन वापस अपना काम कम कर देगा. सो डेट इज़ द मैकेनिज्म, वी कैन से फीडबैक मैकेनिज्म, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल. So here we have activity 7.4. In this table we have to study this table, some important hormones and their functions. So these hormones are secreted by the endocrine glands and have the specific functions. Complete table 7.1 is based on the hormones, the endocrine gland or the functions provided. So here this is our about the endocrine system. जो हमारा endocrine system होता है उसके अंदर बहुत सारी endocrine glands होती है, हमने देखा ऑलरेडी. Pituitary gland, thyroid gland, testes, ovaries, adrenal glands. So these are our glands in our human body particularly. Now growth hormone is related to the pituitary gland, and what is the function of growth hormone? Stimulates the growth in all the organs of our body. Now we have another is thyroid gland. So thyroid gland का function क्या है? Thyroid gland will regulate the metabolism for the body growth. We can say sugar and all the fats, proteins. Now insulin will regulate the blood sugar level. We have testosterone. The endocrine gland is testes, one set of testes. So here this is about the male and ovaries in the female. So these are the testosterone hormone, and in the ovaries estrogen hormones. So what is the function of this ovaries particularly? So development of female sex organs and regulates the menstrual cycle, etc. These are the function of ovaries. Now adrenaline hormone is secreted by the adrenal gland. Okay, now releasing hormone, the function is releasing hormone is the stimulates the pituitary gland to release the hormones. So one here releasing hormone will regulate the pituitary gland to release the another hormones. So this is about our endocrine glands and their hormones. So here our chapter is finished. Now in next lecture we will start our new chapter of biology. So thank you. Jai Swaminarayan.